Knowledge Day. There are few things I wanted to bring to your knowledge because we all are young lads here and probably after this graduation or MC or PCA, you probably will be looking for some kind of good career in technology field. And since especially I work in Oracle, so I probably will be speaking primarily on Oracle. Most of us are aware that Oracle is a database company. That is what we talk about. But this particular database is much older than Oracle because people started working in Oracle rather than databases in late 70s or 1970 and something like that. At that particular time, most of us are aware that there was a concept called database management system. I have been told that in this particular seminar or in this particular session, there are people from BCA background. Correct me if I am wrong. There are people from BCA background. There are people from management background. There are people who are from MCA background, right? Or probably, if there is any other stream, just let me know. People, especially who are coming from management background, probably thinking, what is our role in technology? Probably your institute has asked you to sit in this particular session, and you might be thinking maybe you are not required to attend any seminar, any session related to technology. Probably you are wrong because this technology is open today for anyone probably who uses mobile. This is the simplest thing I can tell you. Anyone who uses mobile, whether comes from arts background, commerce background, IT background, any stream, any background to talk about, they are related to technology for sure. So, anyone can attend this particular session, let me tell you that. So, for the management student, I will come to you guys little later, but especially, let's talk about with IT people first of all. But of course, before I end my session, I will certainly talking about your careers as well. And what your institute is going to offer you in near future. So coming to Oracle company, since it's a database company, databases started in the year 1970 and the initial thing what we used to call as database management system. And prior to that, what was there? Files. Prior to that, what was there? I would say cabinets. Probably where your manual files used to be kept. That's how the things were there. One more thing. The most important thing for this database is this. Sometimes I hear people call it as data, but the right word is data, not data. So if you speak data, stop saying that. So this particular thing is the most important data in the year 1970 or prior to that and till today, or probably future as well. Everything, our life extremely runs on data, nothing else. Example, I already told you, mobile. If you do not have a database, you will not be able to save your numbers. WhatsApp, any game, if you go to your school, college, any restaurant, any hotel, any train travel, any bus travel, you name anything where there is no data. In today's world, everywhere, the most important thing is data. And that particular time, when we never used to have any file system or no IT or no computers, so people used to save the files in a manual system. And after that, file came in. We started storing the data into file systems. The best example is people who are from management background also, I know they use computers as well. So for them also, just to understand, the best example is Notepad. The best example is MS Word. These are those files probably where you save your data. But this data used to be in a very unorganized manner. Meaning, finally if I have stored the data, I have to search that data. And when I am searching that particular data, another example,
When you go to your mobile, you search on the basis of name because you do not remember the complete phone number. Or if your memory is sharp enough, then probably 5, 10, 15, 20 phone numbers you would remember. But beyond that, not possible. So what do? You search on the basis of name. So on data, the most important operation which is being performed is search. Sometimes people also call it as query. I query, but this is not a normal word. Only IT professionals use this word query. But in general language, we use a word called search. So you search your data. So you search your data in mobile, it is much easier because data is organized. But when you search in Notepad, when you search in MS Word, search becomes very, very difficult. So what we do? We go to another option called Excel. Excel is another way where you search your data and you store your data. But this is very different from here. Why? Because here your data is structured in rows and columns. Isn't it? It is much easier to define a type of the data and you store data inside that. But what is the problem with Excel? The problem with Excel is number of rows. This is the major problem. Number of rows. Then second problem is security. Third problem is redundancy. Are you from IT background? Who's from IT background? Which section in this class is from IT background? Who's from BCA? You are BCA student. Yes? So, what do you mean by data redundancy? Yes? Yeah, I'm asking you. Stand up please. What do you mean by data redundancy? Duplication meaning what? Correct. So does Excel stop you? Does Excel stop you whenever you are trying to enter the same data second time? Does it stop you that do not enter the data? It doesn't. Right? Because there is no security, there is no redundancy code which is being taken care of. And number of rows are limited. Like that, there are many problems. Many problems like another problem could be integrity. Integrity issue is also there. So if these problems are not being taken care by Microsoft Excel, and please remember one thing, the idea of this particular session is to introduce you how these things are being implemented in different organizations, in different companies, in different MNCs. So do not block yourself or block your mind thinking that okay, we are learning this particular course here because somebody told me to learn this particular course because computer has got a lot of scope outside. Computers definitely has got a lot of scope outside. IT definitely has got a lot of scope outside. Technology definitely has got a lot of scope outside. But do you fit in that particular scope? That is the question. And if you do not, you learn BCA, you learn MCA, you learn BTech, you learn MTech, you learn PhD, you will be nowhere, I guarantee you that. So it is very, very important for all of us to understand one thing very clearly, that this particular technology, what we are learning over here, it has to be supported by some concept, some idea, which I should be able to implement and understand. So, keeping all these things in mind, we are talking about business over here. And wherever business is there, you people are related to it. Because you are either BA students or probably you are MBA students. So the moment business comes in, right, you people come into picture. And important thing over here, once again I am taking you back to from where I started. For business, what is the most important thing? Darji, what is the most important thing for a business? Yes. What is the most important thing for a business? Speak up. Technology is the most important thing. And what is the most important thing for technology? Although your answer is incorrect, but still. For any business, the most important thing is this. You have to understand this particular thing very clearly. Talk about anything. At the end of the day, it is data, nothing else.
So how you organize your data, how you capture your data. If the question is, how come a data is important for business? Tomorrow if I have to start a new business, if I have to start a new restaurant, I am supposed to know what is the scope of opening up a restaurant in Ambala. I want to learn some kind of vada pav. So is there a scope of vada pav to be sold in Ambala? Yes or no? Who will tell you that? The simple answer probably you will say, Google will tell me that. And how Google will tell you that? Because Google is also storing this. So the bottom line is stories of data. This whole thing, this whole world, especially the planet Earth, is surviving because of so many other factors, but of course, data is very, very important. So if this data is very important, we categorize this data into two types of data. One is a current data. Another we talk about historical data. What is the difference? Current data tells me my current growth. I have something I have planned in this year. That in first quarter I will do this, second quarter I will do that, third quarter I will do that. First quarter I have done a business of 1,000 rupees, for example. It's a hypothetical example, but yes, 1,000 rupees business I have done in this quarter. Is it good or bad? I have to compare it. Right? So with whom I will compare? My last year same quarter. My last year same quarter says I did a business of 700 rupees. So that makes me very happy. Okay, I have gained a profit of 300 or done a better business by rupees 300 this year, this quarter. But what is the business done by my competitors? That also I have to check. Only then I would know whatever my policies are good for my business or not. Whether it will survive for longer duration or it would probably end in 1 year or 2 years time. That is very, very important. So, current data is always going to have a historical data. Every current data, the moment I speak, the moment I finish my session, tomorrow this particular data that Ritesh conducted a session on Wednesday, 11th of May 2022, the moment this day is over, this current data will become old data or obsolete should be not the right word, but historical data. Obsolete data is the data which is no more required. That is obsolete data, right? Stale data. So, historical data always gives me a better comparison to take a decision so that I grow in my business. एक बड़ा छोटा सा example देखो आपको. Interesting example है. Because today I have come by a car and car is Nano. So let me give you an example of Nano only. You know which company launched Nano? Tata. Do you know the reason why this car was launched? Any idea? If anybody has this idea, can stand up and speak. If you simply become simple spectators, listeners, probably that will not help. You have to speak up. Okay. If no, then the idea was, one fine day, Mr. Ratan Tata saw a family driving on a bike. Husband was driving, wife was there, and 2 kids were there. It was raining, and the bike got bad. And this guy in a rainy season was rectifying the bike, and the whole family was standing under the rain probably, and then they were not able to enjoy the environment, the weather, because the bike was bad. So he thought of an idea that middle class cannot buy big cars. So let me come out with an idea, right, that okay, I will make a Lakh Takiya car so that middle class families can also buy that particular car. Let me tell you, today there is no manufacturing of Nano. Right? That thing which he thought probably 10 years back is still applicable. Still we have middle class families in India, isn't it? But there is no Nano, there is no other car. So at that particular time, he sold that particular idea, especially for you business people. Selling an idea with a conviction will lead you to success. So this particular guy came out and said, I felt very bad, with all due respect to Mr. Ratan Tata,
He said, I felt bad when I saw this particular thing, so I thought of an idea. I will come up with a car which can be bought by middle class families, and it will be called Lakh Takkiya car. Right? It will be very cheap. This was strategy of year 1 of nano car. Year 1. Second year they changed the strategy. They sold huge amount of nanos. Well, let me tell you, our neighboring countries also, like Sri Lanka and Bangladesh, they also have nano. Right? Second year they changed the strategy. And the strategy was that this car, since the size is compacted, and in a major cities or metro cities, there is a huge traffic. People are standing, doing nothing at red light signals. But this is a car which does zigzag, goes from the walls of the building, and then you do not wait in the traffic. But we never zigzag, right? We never go over and drive our car on the walls of any building. The idea was the size is so compact, so you can do a small zigzag, and standing back at the queue, probably you can come at the front of the red light signal and probably you can pass very fast. That was the second year sale. The third year they came up with different idea this time. Right? The idea was to show the power of this particular car. So they say a few friends come together, they take this car to the mountains of probably Himachal Pradesh or Uttarakhand, and then they enjoy the tea over there. This was the third year idea. Fourth year, everything become fail, and the overall production of this car was stopped because middle class family did not like it somehow. Although the product is very good. What I'm talking about? I'm talking about historical data. They checked what is required in Indian market for a car to be launched which is small in size. So again I am talking about the same thing. This is very important. So unless or until you have core data, why history has been taught in school colleges? Just to remember where we were, and if we have not progressed, we would not have achieved or reached where we are today. Right? So this is very, very important. So data we categorize in two parts, current and historic, and both data are very, very important. Now, people who are looking for their career in different areas, because I have to relate it to that now. People who are, because see, before coming now to this particular session, I have spoken to few of your teachers just to get an idea what the students over here think about. So they are very much concerned about their career. But when it comes down to database, let me tell you, this is a myth. When it comes down to database, we always believe that database guy will be a DBA guy, database administrator. So this is specifically for IT professionals. Anyone who is learning data does not mean that he or she going to be a database administrator. It is not necessary. It is not important, and most importantly, nobody will give you job to you guys if you are a DBA. Let's be very open about it. Since I come from industry, let's say I have a company. So in my company, I want to hire few people, especially taking care of my data. I already told you why data is so important. A business can fail because of data only. So I would not give my data of the business to people like you who are absolutely novice, who are absolutely fresher, who have no exposure to any data. Why would I give my company's database in your hands? Nobody gives. So for a DBA, you have to have some experience. अभी आप लोग ये बोलोगे कि सर अगर कोई जॉब ही नहीं देगा तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? वो आपका लक है. Let me be very open about it. Either you have to think about becoming a database administrator by yourself, or take a small step, go to a smaller city, go to a smaller company, handle their databases with the confidence I can handle it, and slowly or gradually you improve and go to a company who gives database in your hands. Right? So ये option तो आपके लिए है ही नहीं. Again I am talking about as a fresher. You all guys will be fresher when you will go for your first job. Nobody will put you. Yes, tomorrow if IBM comes here, IBM hires you as a developer, you work as 1 year in that company finds you good enough to take care of the database, they will put you in a team, which is a team of database administrator. Then yes, your career can flourish from there. But as a beginner, there is a big no. So question is, am I supposed to learn
database administration then or not? This is the question. मैं पढ़ूँ इसको कि नहीं पढ़ूँ? The answer is अभी भी आप बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो जिसकी मार्केट में कोई डिमांड नहीं है, पढ़ रहे हो ना? Right? I'm sure PCA student or MCA student must have asked this question. Madam, why we are learning C? कहीं सुना तो MBC यूज हो रही है, पर फिर भी हम C पढ़ रहे हैं. क्यों पढ़ रहे हैं? कभी किसी ने पूछा है कि मैडम हमने ABCD को पढ़ी थी ना, उस ABCD को पढ़ के तो we have come down to a place where we are sitting right now. So you can say in today's world, C is a very basic programming language, but even I have learned C, right? So you and me, in that respect, we are same because we belong to same community, okay? Which is IT professionals. So in this particular language, you learn basics of what? File structure. You learn linked list. If you find it difficult, I think then you will not want to survive in IT for sure, I guarantee you. And this thing is the very, very important thing for a DBMS thing. Because this is the place where you learn how to create file. Because DBMS, RDBMS are based on file structures. And structures is what we learn in C. So C बहुत important है. और एक और चीज, अभी भी वर्ल्ड की टॉप 10 programming languages में C is still there. That is why you need to learn it. You won't get the job, but it will make your fundamentals very, very strong. That is why C is very important. If you really want to see your career as a developer. So DB option, now why I need to learn database administration? I want to learn database administration because it fascinates me. I like it. So anything you like playing cricket, you play. Are you going to go and play IPL? Probably not if you do not see your career in cricket. But still you play. Right? You still play violin or guitar. Are you going to become A.R. Rahman? No. Do you intend to become A.R. Rahman? No. Do you want to? If answer to yourself is yes, then you will be. So it is very, very important what I believe in myself. There are many people who have gone from engineering background to a different level altogether. Madam has told so many things about me. One thing she forgot to mention, that I am a commerce graduate. I am not an IT professional. So it is very, very important. What I wanted to be. I wanted to be a guy making a career in technology. So I did my graduation in commerce and I moved myself towards this direction. Obviously things which you take to understand probably one day, I took 3 days. But I did understand that thing. Because my basics were not good enough. And here I am today, that I am owning 2 different companies which deal only with IT, nothing else. So what you want to be is very, very important. So ऐसा कुछ नहीं है कि BCA वाला बंदा ही टेक्नोलॉजी में जाएगा और MBA वाला बंदा टेक्नोलॉजी में नहीं जाएगा. MBA वाले वो लोग होते हैं जो पूरे टेक्नोलॉजी के लोगों को होल्ड करके रखते हैं. They are the always top most authorities in an organization. Right? हम लोग तो सब जो टेक्नोलॉजी वाले हैं बहुत नीचे का काम करते हैं. So I hope I have answered this to all the students who were asking to sirs or ma'ams, why do I need to learn administration? You need to because you want to. Simple. Then what about the career in other areas? Yes. When you talk about developer side, there is a huge career. There is a huge career. अब कल को अगर आप बोलोगे कि मैं AIMT से पढ़ा था, अपने को जॉब नहीं मिला, तो AIMT का कसूर है? नहीं, क्योंकि हम तो 10 लोगों को पढ़ाएंगे, उसमें से एक भी अगर सेटल हो जाएगा, my job is done. Reason is because I taught same way to everyone. I did not teach specially to that particular student. It is up to you. How you grasped it, how you understood it, how you implemented it, it is up to you. So it's not my fault, let me tell you very clearly. My career, guidance, mentoring was done by my teachers. They are doing the same thing with you. It's up to you.
If I keep on telling you study, and if you say yes, but you don't do it, then who's responsible? You're responsible. For your career, one individual is responsible, nobody else. Now for this developer field, the very first thing which you need to learn is programming. Programming is the first thing. Once again, you are writing a program, you are creating an application. In an application, you are capturing the data. Ultimately, you are storing the data. So, for this storage of data, you have to choose world's-best database software. And world's best database software is produced only by this guy, nobody else. People are very, very far. Maybe you might have heard of lot of other companies which are talking about databases. There was a company, MySQL. There's a company, Microsoft. There is a company, Mongo, which has got MongoDB. Okay? There is, Microsoft has got SQL Server. Then we have got IBM DB2. There is NoSQL. There is, we call it as Postgres. This belongs to Microsoft Postgres. And there are many more. There's not only one company in this world which takes care of database, but 40 plus business is being taken care by this guy. तो आप मरो जियो आईटी में कुछ भी करो, एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि आपको ऑरेकल डेटाबेस पे काम करना ही पड़ेगा। आप मैनेजमेंट के लोग, ऑरेकल डेटाबेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऑरेकल डेटाबेस नहीं मिलेगा तो कौन मिलेगा? फिर ये मिलेगा। फेसबुक यूज करते हैं ना सब लोग? कोई मेरे को बता सकता है फेसबुक कौन सा डेटाबेस यूज करता है? आईटी के लोगों को कभी सोचा ही नहीं, मैडम ने बताया ही नहीं। मैडम तो तब बताएंगे अगर आप पूछोगे। मैडम से पूछने की जरूरत क्या है, तो गूगल भी कर लेंगे। क्या क्या गूगल करोगे? एक चीज सोचिए, एज अ स्टूडेंट अभी तक शायद सोचा नहीं है। आपको गूगल करना आता है तो मुझे भी तो आता है। तो अगर मेरे को गूगल करना आता है, मैं आपको रखूंगा ही क्यों? मेरे को आपकी जरूरत ही क्या है? जितना गूगल आपको बताएगा उतना मेरे को बताएगा। मेरे को आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो मैं ज़्यादा बेटर तरीके से अपना डेटा सर्च कर सकता हूँ। तो ये गूगलिंग करना बंद कर दो, इसका कोई फायदा नहीं है। नॉलेज किल कर रहा है, नॉलेज दे नहीं रहा। नॉलेज को लिमिटेड कर रहा है, एक्सपैंड नहीं कर रहा। हर कोई बंदा आज की तारीख में गूगल पे जाके सर्च कर लेता है, यूट्यूब पे सर्च कर लेता है। अच्छा एसी चेंज करना है, ऐसे कर देते हैं, मैं खुद ही कर दूंगा। और फिर जब करंट लगता है तब पता लगता है कि ओहो ये तो मैंने पढ़ाई नहीं। सो डोंट ट्राई टू बी गुरुज ऑफ अ टेक्नोलॉजी ऑफ एन एरिया विच यू डू नॉट हैव एनी वेयर अबाउट्स। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो MySQL है ये भी ऑरेकल की ही है। आपने दो कंपनीज के नाम सुने, वीवो ओप्पो। वीवो का मोबाइल, ओप्पो का मोबाइल, दोनों किसको बिलोंग करते हैं? एक ही कंपनी को। एक और मार्केटिंग फंडा बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत सारी कंपनीज सेम प्रोडक्ट बनाती है डिफरेंट नाम के साथ, ताकि उनका तो कंपटीशन ही ना आए। देयर आर मेनी पीपल हु डू दैट एंड देयर आर मेनी बिग कंपनीज व्हिच आर एक्चुअली क्रोकोडाइल्स। आई एम लिटरली नॉट टेलिंग देम क्रोकोडाइल, बट दे हैव बिग मनी। सो व्हेन MySQL वाज डूइंग बेटर देन ऑरेकल, ऑरेकल टुक ओवर द कंपनी, दैट्स इट। तो या तो अपना प्रोडक्ट इतना अच्छा बना दो, जब आप बनाओगे कि कोई कंपनी उसको एक्वायर कर ले। इंस्टाग्राम भी काफी लोग यूज करते होंगे, राइट? इंस्टाग्राम का डेटाबेस कौन सा है? अल्टीमेटली उसमें भी तो डेटा जा रहा है ना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, बोथ यूज MySQL। MySQL किसको बिलोंग करता है? ऑरेकल, राइट? पहले MySQL को लिया था Sun Microsystems ने। This was also a very big company. You probably do not know this company, but this is the company which gave us Java, right? And when Oracle found out that I have got a lot of dependency on this Java,
They took over Microsoft. Sorry, they took over Microsystems. Sorry, Sun Microsystems. So they took Sun Microsystems. In a way, they took Java. In a way, they took MySQL. So Java also belongs to all. So for a programmer these days, there is a lot of confusion. Which language I am supposed to learn? See, whatever your degree languages are, you are bound to learn those languages. You cannot ignore that because you have to get your degree, you have to get your certificate, so you are supposed to learn that, right? But important thing is what you learned, what I learned is same. So when I went for my first job, I mentioned almost 15 things which I could do. 15. So my company said, whatever you know, what we need are only these. That's it. So when I was hired by my company, from my college, whatever I studied, only 2 things were there which was required by that company. And one of those things was this. You have not even heard of this. WordStar was the older version of MS Word, let me put it that way. Okay? So this is what I learned. So this was one of those 2 things. And the second thing which helped me was that time C helped me. Because C made my basics very clear. So for a developer, very important thing, if you are, I do not know because I have not gone through the curriculum, which I certainly would be, but I have not seen your curriculum. For any developer, for any programmer, the very first thing which they are supposed to learn is what we basically call as flowcharts, or what we call as programming skills. If you can imagine, if I ask you, write a small program which gives me a series from 1 to 10. So what you would do, open up the system, go and write down the programs, right? No. I want you to imagine, write it down on a piece of paper. What do you think how the logic will work? Because everything is based on logic these days. So everything, before writing the program actually, you have to design some kind of pseudocode of it. Prior to pseudocode, we have something called as flowcharts, which we make. So if you are good in making flowcharts, only then you are eligible to be a better programmer. Otherwise, you will struggle a lot. There is big struggle. जितना किसी को लगता है ना, सबसे पहले तो पेरेंट्स हमें बहुत डिस्टर्ब करते हैं कि यार सब लोग कंप्यूटर्स कर रहे हैं, इंडिया के बाहर चले जाओगे, कंप्यूटर कर लो, कंप्यूटर कर लो, कंप्यूटर कर लो। आई डोंट रिकमेंड दैट। मेरे को लगता है कि वो करो जो आप करना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो करो, नहीं लगता तो मत करो। द रीज़न बीइंग इज आईटी में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीपलेस नाइट्स। आप सो नहीं सकते आईटी में। और ये खाली मैं स्टूडेंट्स के लिए बोलता हूँ, मैं सबके लिए बोलता हूँ, इट इज एप्लीकेबल टू मी बिकॉज आई बिलोंग टू दैट फ्रेटर्निटी, आई बिलोंग टू दिस स्ट्रीम, I belong to this area, so even I do not sleep. Many times, 24 hours, 48 hours, 72 hours, 1 or 2 hours, you are taking a power naps, that is it. Reason? Because every day technology is changing. And the moment you are out of it for a 15 days duration, you are gone. Your hard work will be too much. So BCA में अगर लगता है, या MCA में अगर लगता है कि यार ये पढ़ लिया, जॉब मिल जाएगी, कंपनी को 1 मिनट नहीं लगेगा आपको निकालते हुए, भले ही आप वहाँ पे 20 साल से काम कर रहे हो। इफ़ यू बिकम एलिफेंट इन दैट कंपनी, ईटिंग बट डूइंग नथिंग, यू विल बी किक्ड, राइट? दिस इज वेरी शूर काइंड ऑफ इंडस्ट्री। रिक्वायर्ड एक मैनेजर को निकाल देंगे अगर वो काम नहीं कर रहा है, एम्प्लॉय को रखेंगे क्योंकि वो काम कर रहा है। सो बहुत शूर इंडस्ट्री है, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। सो इफ यू हैव माइंडसेट टू कीप लर्निंग, then this is the field for you. So for developer, there are so many programming languages these days. Python is one among them. Java is one among them. Obviously C, C++ तो है ही, right? उसके अलावा बड़ी सारी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो शायद आपने सुनी नहीं। एक Go है, एक Dart है, एक Flutter है, right? एक Kelvin है।
रिएक्ट जेएस है, जावास्क्रिप्ट है। तो जितना पढ़ो उतना कम। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लॉजिक चेंज नहीं होते, सिंटैक्स चेंज होते हैं। तो अगर आप मेरे से किसी जावा का सिंटैक्स पूछोगे तो प्रोबेबली मैं आई विल नॉट टेल यू, बट आई विल डेफिनेटली बी एबल टू टेल यू द लॉजिक, हाउ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज शुड बी रिटन और गॉट टू बी रिटन. So the most important thing is, don't think today I'm learning Python, tomorrow somebody is asking me to learn Java, then someone is asking me to learn JavaScript, then someone is asking me to learn Perl, then someone is asking me to learn Go, someone is asking me to learn R, right? There are huge number of programming languages. There are more than, if I'm not wrong, there are more than 1,000 languages which are there. सब तो नहीं सीख सकते, तो क्या सीख सकते हो? अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स, हाउ अ लॉजिक इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड, हाउ अ लॉजिक इज गोइंग टू बी रिटन, एंड दैट इज व्हाट यू लर्न इन pseudoCode एंड दैट इज व्हाट यू लर्न इन फ्लोचार्ट्स. तो प्रोग्रामिंग में बहुत करियर है, बट इसका जो पे स्केल होता है उतना कंपेरेटिवली कम होता है. पे स्केल इज इनिशियल बिकॉज यू ऑल आर फ्रेशर्स, डोंट फॉरगेट दैट, राइट? तो उसमें पे स्केल कंपेरेटिवली थोड़ा कम होता है. But this is also good stream. If anyone has any question related to this, you can ask me. Let's come down to database management system. Who is called as father of RDBMS? Who is called? You know who is called father of computers? Everyone knows. Most of them know. But who is called father of RDBMS? Professor E.F. Cole. He died in 2003. So I'm very sorry that we will not going to meet him now, because he's passed away. So this guy gave, rather I would say, 13 rules. Computer to 12. Gave 13 rules that any software which is called RDBMS has to go by these 12 rules. If no, then that software will not be called RDBMS. And these rules were picked up and supported by an organization called ANSI. I am sure all the computer background people will be knowing what is the full form of ANSI. You know? Don't tell me you don't know. Yes, ma'am. You know the full form? No? Anyone? Open to all. This is called American National Standard Institute. This is a worldwide organization which gives rules of RDBMS. Any software which is called RDBMS has to support these 12 rules. Obviously, these rules I would discuss in some other class, because this is not the class to discuss the rules. But the major thing what we talk about in RDBMS is relational database management system, that the data is going to be stored in tables and in columns. This is how the data is going to be stored. In simple words, you can understand it as a matrix. It's a matrix, right? So tables and columns are going to be supported, and there can be many tables. There can be many tables. Now, to the management candidates in this class, let's say we have State Bank of India. We have State Bank of India. State Bank of India uses a database. If it uses a database, they will have tables. Just have a guess how many tables they will have. Just a guess. Don't make wildest guess. Probably you will say they will have 1 crore tables. Not like that. Even if they have 10 lakh
tables. 10 lakh table is also very big size of tables. No information can be stored in a single table. The information is going to be stored in multiple tables. Indeed. So every business, whether it is banking business, pharmaceutical business, finance organization, human resource organizations, supply chain management organizations, project organization, you name, insurance, you name type of organization, they will have thousands and thousands and thousands of tables. So to store the data and to fetch the data, obviously they have to use some application. And for that application, you have to use some kind of programming language. If some kind of programming language has to be used, some kind of developer will be required. So this direction, this sequence is absolutely clear what we need to do. Question is, we did face some problems with RDBMS and we came up with something called as ORDBMS. In ORDBMS also, information is stored in tables and in columns, but there is a concept called object orientation. So people who know C++, people who know Java, they know what is object orientation. And I think somewhere in your BCA, you also have object orientation concept as well. It has been discussed. Object orientation has been discussed and UML also has been discussed. Right? These are two very important basics for ORDBMS. So this was the concept which came out. Then came out cloud. And these days, everyone talks about cloud, nothing else, nothing less, nothing more. Cloud is something what is going to exist for some more time. And that reminds me to tell you that in technology, nothing is permanent. Everything is going to be changed. Today, if I am telling you, learn Java, learn Python, after 1 year when we meet again probably, I would say, now learn this, learn that. Then you cannot pinpoint that 1 year back I told you to learn this because I told you technology is ever changing. So you have to keep learning. And same goes to management people also. The moment new application comes in, they also need to learn those things as well. So we'll talk about this cloud as well. But prior to that, the latest version of Oracle database. This is the latest version called 21C, where C stands for cloud. This is the latest version. Your college, I probably right now cannot inform you about those things which your college recently has done because it has to come from a proper channel. But let me at least tell you that your college has done something with Oracle. They have tried to bring Oracle to your college. And I just expect every student to learn. The moment college launches some of the courses on Oracle, whether you come from BBA background, whether you come from BCA background, MBA background or MCA background, it is almost must for everyone to attend that particular course. Because this will take you people way ahead from all the colleges in this northern region, I guarantee you. Way ahead. So if no company comes in your college to hire you, nothing to worry about. Whichever company you will go and you show that you know this, there is a huge probability that company will hire you. Because ultimately how you perform in your interview, it depends on that. But the moment they are going to see that you have done something in Oracle, there is one guarantee that yes, you could be shortlisted. Rest, it's up to you. Okay? So the moment your college launches this particular course, please attend that particular course. Because there are huge advantages. What is the advantage? At least I can tell you one advantage which you can go back to your family and you can tell your parents. If you have to take one course from Oracle called SQL, Introduction to SQL. I'm not talking about local institutions. Okay? Local institutions might offer you this particular course in 500 rupees or 1000 rupees. Point is you are learning from creator. Local company is not creator. Local institute is not creator. You are learning from creator. So when you are learning from creator, obviously you have to pay
higher pricing. So if you take this particular course, this is 5 days course only. 5 days into 8 hours a day becomes 40 hours. 40 hours course is there from Oracle. It costs 900 per day. So 900 multiplied by 5 comes out to be 4,500 per day to learn from Oracle. But I forgot to mention, it is $4,500 course. So you multiply. If someone is attending this course from some private institute, once again I am telling you, I guarantee you, you compare that course with the course which your college is going to teach you. Forget about your cost. We'll look into that particular cost. I am just telling you, do not consider it such a light course in terms of money. So you can imagine if this course is this much costly, what value it will add to your biodata, what value it will add to your resume, how people are going to look at your curriculum vitae. So this is going to give a huge boost to your CV. If you learn any course which your college teaches you in Oracle technology, because your college has made one small thing related to Oracle, and in this region nobody is going to have that. Nobody. So consider it that way. But obviously we are trying to do all possible things so that we can get as much as career opportunities outside your college and city. Okay? Let's talk about cloud. I'm so sorry that I have to move from one thing to another thing very fast because I've got limited time to talk to you. I'll be keep coming to your college, so whenever you feel like meeting and asking anything, I'll be available. Okay? Can anyone tell me what is cloud? What is your understanding about cloud? Because when I heard this particular word for the very first time, I got very confused. Because before this cloud word, I heard only one word called grid. I was okay with this word grid. But then all of a sudden came in cloud. And Google was the first one to use this particular word, cloud. And everyone started talking about cloud. अब किसी को ढंग से पता भी नहीं है कि इसमें है क्या. खाली इतना पता होगा शायद कि इसमें मेरे को हार्ड डिस्क की जरूरत नहीं है, मेरे को स्पेस मिल जाता है और स्पेस में जाकर मैं डेटा डाल देता हूँ. डाल देते हो, सही बात है, लेकिन आपको पता भी है उस डेटा का हो क्या रहा है. अगर मेरी कंपनी ने एक सर्वर बनाया और बोला अपना डेटा मेरे को दे दो, मैं आपको चार्ज कर रहा हूँ और बहुत नॉमिनल चार्ज करूँगा. ठीक है, आप बोलोगे अच्छा सबसे सस्ता तो यही है, इसके पास डेटा यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमारे को हार्ड डिस्क यूज़ करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अब मैं उसका ओनर हूँ. द मोमेंट आई बिकम ओनर, आई कैन डू एनीथिंग वॉट एवर आई वॉन्ट. आई प्रोबेबली विल बी सेलिंग दैट पर्टिकुलर डेटा टू समवेयर, टू समवन, एंड इन रिटर्न आई वुड सडनली गेट सम काइंड ऑफ प्राइस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर गाय. सिंपल सा लॉजिक है. आप बैंक में गए, आपने बैंक में पैसा जमा कराया, आपने बैंक में अपना गोल्ड जमा कराया. अब आपको क्या लगता है कि उसने 2-4 सिक्योरिटी गार्ड रख दिए हैं और उस पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए? ऐसा नहीं होता ना. वो उस पैसे को यूज़ करता है ना बैंक. ठीक है, उस पैसे को यूज़ करता है, प्रॉफिट लेता है, आपको कुछ देता है? कुछ नहीं देता है. जब आप एफडी कराते हो तो बहुत कम इंटरेस्ट देता है. ठीक है, फिर जब आप लोन कराते हो अच्छी स्कीम्स देता है, बट हर जगह से आपसे पैसे लेता है, आपको कुछ नहीं मिलता. मतलब आई मीन अभी तो शायद आपको नहीं इतना आइडिया है, आपके पेरेंट्स को कुछ नहीं मिलता. सो वही चीज़ डेटा का भी, यहाँ पे भी डेटा का वही हाल है कि आपसे मैं लूँगा, आपसे चार्ज भी करूँगा, उसको बेचूँगा भी और उससे प्रॉफिट भी लूँगा. तो इस वर्ड का मतलब आखिर है क्या? जब आप किसी एटीएम पे जाते हो ना और पैसे निकालते हो, especially all those people who come from IT background, it is very very important for all you guys to understand few things. कभी भी किसी रेस्टोरेंट में गए, कभी मैकडॉनल्ड्स में गए, कभी पिज़्ज़ा हट पे गए, कभी डोमिनोज पे गए, आप जब जाके वहाँ पे देखो
कि जब वो एंटर करता है डेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, राइट, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ किया है. दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू क्रिएट अ इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. दैट ओके, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. सो कभी नोटिस किया आपने कुछ टाइम पहले, शायद आप तब लोग, शायद कुछ लोग पैदा नहीं हुए होंगे, बट एटीएम्स नहीं थे हमारे पास. वी यूज्ड टू गो टू द बैंक, और बैंक ऐसा होता था ना, कोई फेयर चल रहा है वहाँ पे, मेला होता था, मेला, और पैसे निकालने के लिए लोग लड़ रहे होते थे. आप शायद ये इमेजिन भी नहीं कर सकते, बट कभी अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स से अगर आप बात करेंगे तो किसी ना किसी के ग्रैंड पेरेंट ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि यार मेरा कुर्ता फट गया था, मेरी शर्ट फट गई थी, पैसे निकालते हुए. तुम लोग बहुत लकी हो कि तुम लोगों को इतनी आसानी से पैसे मिल जाते हैं. तो उस टाइम पे काउंटर पे जो बैठा होता था वो ऑलमोस्ट गॉड होता था, राइट, क्योंकि वो पैसे दे रहा है ना, तो जो पैसे देता है वो गॉड है. पैसे मेरे ही हैं, पैसे मेरे ही हैं, पर भगवान वो है कि तू मुझे पैसे दे रहा है. तो फिर जब टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, उस टेक्नोलॉजी में सबसे पहले आए एटीएम्स. एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, मेरे को सुन नहीं रहा, थोड़ा जस्ट स्पीक लिटिल लाउडर, गला खराब है. यस मैम. ऑटोमेटिक, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? Automatic teller machine, sure? Huh? Any time machine? What? Any teller machine? Any time money? Wow, तो खुद की डेफिनेशन. Automatic teller machine and any time money machine. किसने रखा है any time money machine? It's a good thing. Anyways. Idea is not that. Idea is few years back. Supposing if there is a bank called ICICI Bank, ICICI Bank, you could go and use that particular debit card only in the ATMs of ICICI. सिर्फ एक इस्तेमाल कर सकते हैं. क्यों? अगर मान लो HDFC का ATM है, if there is an HDFC ATM, I could not use ICICI debit card in this ATM. I could not. Now I am, of course, but those days I could not. But why? Someone has to stand and answer this question. ये मत सोचना कि मेरा जवाब गलत है, ये सोचना कि मैंने खड़े होकर जवाब दिया. So why it was not possible to use or swipe your ICICI bank card into the ATMs of HDFC? Simple answer है वैसे इसका. Correct, because ICICI database is different, HDFC database is different. Different है, दोनों के databases अलग है, अलग है और connected नहीं है, अलग है और connected नहीं है. एक और एग्जाम्पल से समझो अगर ये समझ में नहीं आ रहा. If any student is studying in some college in Hyderabad, you are studying here, that guy is studying there. Can you do the study of the college which is there in Hyderabad? No, unless or until you get yourself registered in that particular college. Simple है, नहीं कर सकते हम लोग. लेकिन अगर दोनों यूनिवर्सिटी कनेक्ट हो जाए, अगर दोनों यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करने लग जाए, so without going there physically, I can still attend that particular course from here. तो वो इन कंपनीज ने भी किया. दोनों कंपनीज ने आपस में बात करी कि भाई हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं, उससे क्या फायदा है कि तुम्हारे कस्टमर खुश रहेंगे, मेरे एटीएम में भी डेटा के पैसा निकाल सकते हैं और आपके कस्टमर्स भी निकाल सकते हैं. हमें सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि जब भी कोई कस्टमर, HDFC का कस्टमर को ICICI के एटीएम में गया और उसने अपना यूजर नेम और पासवर्ड दिया, तो उस यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू उसको पता लग जाता है कि ये HDFC का कस्टमर है. अब मैं बहुत टेक्निकल जा रहा हूँ, बहुत टेक्निकल, बिकॉज रिक्वायर्ड है, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड. आपने कभी नोटिस किया है, अब नाउ आपका जो अकाउंट नंबर होता है, इट गोज लाइक दिस 0 1 2 5 4 9 3 2 7 8 1 2 0 0 समथिंग लाइक दैट. तो क्या उस बैंक में इतने अकाउंट होल्डर्स हैं? नहीं, इतने अकाउंट होल्डर्स तो नहीं है.
तो फिर ये क्या है नंबर? ये नंबर आपका ब्रोकन नंबर होता है इंटरनली। मे बी फर्स्ट फ्यू डिजिट्स टेल कि कौन सा बैंक है, कौन सा बैंक है, कौन सी ब्रांच है, ठीक है, कौन सी सिटी है, कौन से टाइप का अकाउंट है और एक्चुअल अकाउंट नंबर क्या है। उसके बेसिस पे पता लगता है कि एचडीएफसी का कस्टमर है। तो आपके नंबर, दीज नंबर्स आर मैजिक नंबर्स। ये एग्जांपल नहीं समझ में आता तो एक और एग्जांपल देता हूँ जो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। आप लोग अपने स्कूटर वगैरह पे आते हैं, एक्टिवा पे आते हैं, कार में आते हैं और उसका एक नंबर होता है, राइट। अंबाला की गाड़ी होगी तो 01 होगा, पता लग जाता है, HR हरियाणा। सो दिस इज नॉट अ नॉर्मल नंबर, वी कॉल इट एज इंटेलिजेंट नंबर। ये नंबर अपने आप में इंटेलिजेंट है बिकॉज इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन अदर देन जस्ट नंबर्स, राइट। सो दैट इज हाउ आप यूज कर सकते हो। अब दुनिया छोटी कैसे हो गई? ऐसे छोटी हो गई, अब एक बैंक है न्यूजीलैंड बैंक, वी कॉल इट एज NZ बैंक। If I go down and travel down to Auckland, New Zealand, I will be able to use ICICI card in the bank, in the ATMs of New Zealand Bank, which is altogether a different country, which is altogether a different bank, but it is also connected with my bank as well. That is how the whole world became small. लेकिन हम बात वो नहीं कर रहे, बात हम ये कर रहे हैं इसके पीछे की टेक्नोलॉजी की, बिकॉज टुडे इज द टेक्नोलॉजी डे। तो ये जो इसके पीछे की टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग बोलते हैं बैक एंड टेक्नोलॉजी। एंड फॉर बैक एंड टेक्नोलॉजी वी राइट APIs, बिकॉज एज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। ये लिखते हैं हम लोग, ये लिखते तो हम लोग हैं बिकॉज वी आर टेक्निकल पीपल, बट वी डू नॉट नो द फंक्शनिंग ऑफ दीज। Please understand that. We do not understand the functioning of these. Who understand the functioning of these? The person who is specialist in banking. These are the people probably in future. If they come from MBA background or if they come from BBA background or if they specialize in banking, they would let us know that what exactly they want. So these are the people, the management people basically let us know what they want and we automate the things for them. So कोई भी IT का स्टूडेंट होगा, आज कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी चीज़ में चले जाओ, जोमेटो की हम लोग बात करते हैं, स्विगी की बात करते हैं, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है सारे, राइट। आप ट्रैक कर सकते हो आपकी ट्रेन कहाँ पर है, आप ट्रैक कर सकते हो आपका व्हीकल कहाँ पे है। वॉट इज यू आर नॉट एबल टू ट्रैक, एवरीथिंग यू आर एबल टू ट्रैक, बट ट्रैकिंग इज एब्सोल्युटली डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। ट्रैकिंग जो हमारा GPS सिस्टम है ना, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। तो किसी को स्ट्रक्चर डेटा में काम करके मजा आता है, किसी को अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में काम करके मजा आता है। जो मैप्स होते हैं हमारे पास, राइट, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, क्योंकि रोड्स है, जिगजैग है, लोकेशंस है। तो इस तरह के डेटा को यूज करने के लिए यूज होती है NoSQL, और NoSQL को यूज करने वाला एक डेटाबेस Firebase। ये नाम ही नहीं सुने होंगे, टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच चुकी है। But the thing is that if you keep teaching yourself, keep learning, then these are the things which you basically do. And why I am talking about all these things? Because what has been taught in your institute and what has been offered by a company, there is no mismatch, there is complete mismatch. अपने इंस्टीट्यूट से पढ़ के आपको जॉब नहीं मिल सकती, ये हार्ड ट्रूथ है, हार्ड रियलिटी, राइट। इट्स नॉट एनीबॉडीज फॉल्ट, because universities cannot come out with different kind of courses each year because technology is changing very fast. So they have to keep on talk about basics things. That basics will remain same. So here, to bridge this gap, you have to go with some kind of professional courses. And professional courses when you talk about, they are very very costly. I have already told you, $900 per day is cost of a very simple professional course. If you go more higher, if you talk about, or if you take 1 year courses from Oracle, if you take 1 year course from Oracle, the cost is this much. This is 1 year cost. Of course, everything is available 24 hours to you, right? But obviously your college is making a lot of efforts now to introduce professional courses to you so that you can go and get
better placements. But bottom line is, you still have to study, right? So this is overall story what you need to understand. BD options are available to you, networking options are available to you, developer options are available to you. You have to choose your career path wisely. Coming back to cloud, these two are, I already given an example that how these guys are connected. एक और एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं. कुछ साल पहले हमारे घर में जब लाइट आती थी ना, अम्बाला की बात करते हैं, हमारे घर में जब लाइट आती थी, क्योंकि मेरे घर के पास एक पावर स्टेशन था, वहाँ से लाइट आई, उस पावर स्टेशन में लाइट गई, मेरे घर की लाइट गई. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैं अपना एटीएम अपने बैंक में यूज करूँगा. अब मेरे बैंक का मेरा एटीएम बंद है तो मैं दूसरे बैंक में जा सकता हूँ ना. तो अगर मेरे घर में लाइट मेरे पावर स्टेशन से नहीं आ रही तो मेरे पास दूसरा पावर स्टेशन है ना, वहाँ से भी लाइट आ सकती है. 2 फेज सिस्टम भी होता है, 3 फेज सिस्टम भी होता है. तो जब तक आपके पूरे शहर में लाइट नहीं है तब तक आपके घर में अगर लाइट आ रही है, इसका मतलब क्या है कि आप यू आर कनेक्टेड टू मल्टीपल ग्रिड्स. बट कभी आपने ये जानने की कोशिश करी है कि लाइट आ कौन सी ग्रिड से रही है? नहीं. क्यों? जरूरत क्या है ना. I am not bothered from which grid I am getting the electricity. What I am concerned about, I must get the electricity. Simple. तो वैसे ही अगर मैं एक डेटाबेस के साथ कनेक्टेड हूँ, अगर एक डेटाबेस के साथ कनेक्ट हूँ, due to some reason, if this database goes down, तो मेरा तो सारा काम बंद हो जाएगा ना. अगर फेसबुक का डेटाबेस डाउन हो जाए तो पूरी दुनिया में क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी टिपिकल हिंदी लैंग्वेज में हाहाकार मच जाएगा कि अरे फेसबुक बंद हो गया, फेसबुक बंद हो गया, फेसबुक बंद हो गया. अरे फेसबुक पे कर क्या रहे हो? कुछ भी तो नहीं कर रहे हो, सिर्फ मैसेज ही तो डाल रहे हो, पिक्चर ही तो अपलोड कर रहे हो. परेशान हो वो मैसेजेस लिख रहे हो बस, बिजनेस को रन नहीं कर रहे फेसबुक से. बट स्टिल पीपल विल गो मैड इफ फेसबुक स्टॉप्स. बट ऐसा कभी हुआ है कि फेसबुक बंद हुआ? कभी नहीं हुआ. इट्स अ रेयरेस्ट सिचुएशन. Even if they stop the server for 1 minute or 2 minutes or 3 minutes, there's a huge amount of money loss in trillion, billion, whatever it is. There's a huge loss. So it is very, very important for all of us to understand the database has to be up all the time. आपने कभी किसी कॉल सेंटर पे कॉल किया है? कभी किसी आपका टीवी नहीं चल रहा है, उसके कॉल सेंटर पे कॉल किया हो, राइट? फ्री नंबर आते हैं 1800 समथिंग लाइक दैट. बट आपको पता भी लगता है कि वो कनेक्ट कहाँ पे कर रहा है. हो सकता है कोई मद्रास से हमें रिप्लाई कर रहा हो, हो सकता है कोई सिंगापुर से हमें रिप्लाई कर रहा हो, राइट? नहीं पता लगता ना. क्यों? क्योंकि जब एक स्टेशन उनका बिजी हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी कॉल को अपने दूसरे स्टेशन पे भेज देते हैं. वहाँ पे बिजी होता है तो तीसरे स्टेशन पे. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट डजंट मैटर दैट विच सेंटर आंसर्ड योर क्वेरी. इंपॉर्टेंट इज यू गॉट द आंसर. This is the same thing with cloud as well. Same thing. जब आकाश में बादल आते हैं, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ इसलिए because there are few non-IT people as well and they do not understand the technical meaning and technical definition of this word called cloud. तो जब ऊपर बादल है, बारिश होती है, कभी मैटर किया आपने कि ये वाला बादल बारिश कर रहा है या वो वाला बादल बारिश कर रहा है? नहीं ना. बारिश चाहिए, that's it. रेन ड्रॉप्स नीचे आ गए, खत्म. और कंसीडर करो कि वो रेन ड्रॉप्स क्या है? डेटा. तो इस सर्वर से आए, उस सर्वर से आए, किसी भी सर्वर से आए, हाउ डज इट मैटर? गूगल पे आप कोई भी क्वेरी जब आप करते हो तो रिस्पॉन्स इमीडिएटली आता है ना. पर आप सोच के देखो, गूगल इंजन को पूरी दुनिया यूज कर रही है अलग अलग टाइम जोन पे. तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक बार कोई भी क्वेरी एंटर करेगा, अगर कोई इस्तांबुल में बैठा है, कोई सऊदी में बैठा है, राइट, कोई फिजी में बैठा है, कोई मॉरिशस में बैठा है, और सेम टाइम पे क्वेरी डाल रहे हैं गूगल में, राइट, और सबको तुरंत जवाब मिल रहा है ना. तो आपको लगता है कि एक ही मशीन इन सबको जवाब दे रही है? नहीं. देयर आर मल्टीपल सर्वर्स विच आर आंसरिंग. तो वो सारे के सारे सर्वर डेटा कहाँ से लेते हैं? क्लाउड से. किसी भी जरिए जा सकते हैं, किसी भी मीडियम के थ्रू ट्रैवल करता है आपका डेटा. सो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग. तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लाउड टेक्नोलॉजी. और हमारे पास क्लाउड में बहुत सारा करियर ऑप्शन अवेलेबल है, बहुत सारे करियर ऑप्शन अवेलेबल है क्लाउड. बट क्लाउड आई डोंट थिंक आपके रेगुलर करिकुलम में है. आई डोंट थिंक सो. इफ इट इज देयर इट इज गुड, बट इफ इट इज नॉट देयर देन अगेन यू विल हैव अ प्रॉब्लम फाइंडिंग अ जॉब इन अ वेरी लिमिटेड कंपनी. नहीं मिलेगा.
So again, some career if you are looking for in cloud, you have to go with some professional courses. And since it's the latest technology, the courses in the market are not cheaper. They are much costlier, right? But again, you have to go for that. Otherwise, there is no survival. Most of the time, people look for something called finance. Finance is that area where you know that there are a lot of job opportunities are available, because the most important and critical thing for any business is to manage finance. But at the same time, managing resources is also very, very important. Resource comes under HR. And there are a lot of manufacturing companies like Tata is there, automobile companies are there, who are definitely looking for something called as this. Because as supply chain management. And there are a lot of road buildings are happening, national highways are being built, right? For that, you have what? Now it is that area where once again the technology is playing very important role. The technology is playing very important role. Why and how? Who will create software for them? This side. They will create software, but they don't have any idea of stock market. They do not have any idea about mutual funds. You have that idea, right? So both of you have to speak to each other, right? But the moment you utter a single word, they will not understand, because they have been brought up in a different way. The moment they utter a single word, you will not understand what these guys are talking about. So there is a huge lack of communication between these two parties. So every organization these days looking for three types of people. We call it as technical people, who will create systems for them. We call them as functional consultants, who know the business terms, and then since these two guys cannot talk to each other, so we come up with something called as T+F, techno-functional. You might be surprised the moment I said, or the moment I told you that I come from a commerce background, right? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि कॉमर्स बैकग्राउंड से आईटी में गए कैसे? तो बेसिकली इफ यू अंडरस्टैंड, आई एम अ T+F, आई एम अ टेक्निकल कंसल्टेंट as well as I understand the business, so I am functional consultant as well. So I am that bridge जो आपको भी समझा सकता है और आपको भी समझा सकता है कि टेक्नोलॉजी आपके लिए कितना बेनिफिशियल है और टेक्नोलॉजी आपके लिए कितना बेनिफिशियल है. आप अपना करियर ग्रोथ कैसे बना सकते हो, ये अपना करियर ग्रोथ कैसे बना सकते हो, राइट? बिकॉज आई हैव नॉलेज ऑफ दीज टू एरियाज कंप्लीटली, राइट? अब मेरे जैसे लोग बीच में बैठ के पूरा सिस्टम बनवाएंगे, इन लोगों से ये लोग सिस्टम बनाएंगे. अब ये जो फंक्शनल कंसल्टेंट है वो फिनेंस बैकग्राउंड से आएगा, सो दैट आई कैन मेक फिनेंस एप्लीकेशन. ह्यूमन रिसोर्स से आएगा तो आई कैन मेक ह्यूमन रिसोर्स एप्लीकेशन. This is called supply chain management, right? So I can work for that as well. Although I planned one session for you from my team on 14, but I have been told that 14th I think you have some industry visit, so we will not plan it on 14th. Probably we will plan it next week or maybe next month. We will see to it. So this particular session will only be for BBA students, MCOM students, BCOM students, and MBA students, where we can explain you how cloud and how your area of expertise is using technology and what you people are supposed to do, what you people are supposed to learn other than what is being taught in your college or in your classes, right? But yes, technology is very, very important for you people as well, because everything these days is on table, right? अब last में एक और area, I hope you are not feeling sleepy. If you are feeling sleepy, if you are not understanding anything, even a single person tells me stop, I will stop. But the most important area जिसमें सबसे ज़्यादा आज की तारीख में पैसे मिलेंगे, मिल रहे हैं, वो है ये रिपोर्ट्स. और रिपोर्ट्स किसके ऊपर बेस्ड है? डेटा. सो टेक्नोलॉजी में एक चीज़ पे तो खास ध्यान रखना है, हर चीज़ को, जो भी काम आप घर से करते निकलते हो और देखते हो आपकी आंखों से निकलता है ना, उस सब में डेटा को ढूंढना कि यहाँ पे डेटा क्या है,
अगर मैं कार से आया तो कार से रिलेटेड डेटा कौन सा है, अगर मेरे डैड ऑफिस जा रहे हैं तो उनके ऑफिस में किस तरह का डेटा होता है। स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट डेटा। और डेटा की एक और स्टोरी मैं बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2003 में एक सर्वे हुआ था, 2003 में एक सर्वे हुआ और उस सर्वे में बोला गया कि वर्ल्ड वाइड जितना भी डेटा है ना तो सबको कंप्यूटर में ले आओ, जितना भी डेटा है। तो हमारे जितने भी माइथोलॉजिकल डेटा है, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, उन सब का डेटा भी सब कंप्यूटर में चला गया, अभी भी जा रहा है। तो 2003 में वर्ल्ड वाइड पूरा डेटा कंप्यूटराइज हो गया, पूरा डेटा, मतलब हमारी जो पूरी हिस्ट्री का डेटा है वहाँ से जितना भी अवेलेबल डेटा था वो सारा हो गया। तो जितना डेटा 2003 में कलेक्ट हुआ था, अगले 3 साल में उतना ही डेटा फिर से बन गया, उससे अगले 2 साल में उतना ही डेटा बन गया, फिर 1 साल में, और अब 10 मिनट में उतना डेटा बनता है। तो आप सोचो कि डेटा कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। अब आप सोच रहे हो कि अरे डेटा कैसे बढ़ रहा है, मालूम है कैसे बढ़ रहा है? आप रोज जाके फेसबुक पे कुछ ना कुछ लिखते हो ना, वो क्या है? डेटा है, वो डेटा है। क्योंकि सुबह सुबह आपने लिखा व्हाट्स इन माई माइंड, आई एम नॉट हैप्पी विद, सिंस पूनम मैडम इज नॉट देयर, सो आई एम नॉट हैप्पी विद पूनम मैडम, राइट? अब जैसे ही गूगल और जैसे ही फेसबुक को पता लगा ये तो पूनम कौन है, डेटा ढूंढा जाएगा पूनम कौन है, ओके यहाँ पे टीचर है। वैसी टेक्नोलॉजी के कितने टीचर्स हैं, तो आपको सबको वैसा वैसा डेटा दिखाना शुरू कर देगा। आपने कभी नोटिस तो किया होगा कि फेसबुक में जो डेटा आप एक बार सोचते हो, सर्च करते हो, वैसा ही डेटा आना शुरू हो जाता है, ठीक है? आप व्हाट्सएप में कोई नया नंबर ऐड करते हो तो वो क्या करता है, आपको तुरंत फेसबुक पे भी बताता है कि एज अ सजेशन दिस इज ऑल्सो अवेलेबल टू यू टू मेक अ फ्रेंड। आप जस्ट इमेजिन हाउ इमीडिएटली दे आर वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर डेटा टू गाइड यू दोज थिंग्स। इट्स नॉट पीपल ओरिएंटेड सिस्टम, इट इज प्रोसेस ओरिएंटेड सिस्टम। कोई ना कोई प्रोग्राम लिखा होगा उसके लिए जो काम करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो जो आप पूरी दुनिया में लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया यूज़ होता है, तो डेटा तो ग्रो करेगा ही ना। तो उस हिसाब से डेटा ग्रो कर रहा है, हर 10 मिनट में उतना ही डेटा कलेक्ट हो रहा है आज की तारीख में। तो पहले इसीलिए तो पहले जब when we studied we had everything up to gigabyte, जीबी तक था सब कुछ। अब आप देख लो काम करो, हमें सिर्फ क्लासरूम में इतना बताया गया था 1024 megabytes is equals to 1 gigabyte, and story has gone much beyond than that, right? So ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर इतना डेटा है, इस डेटा का करेंगे क्या? ये करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, और इसी रिपोर्ट से कॉन्सेप्ट आया है। मैम ऑल्सो टोल्ड अबाउट when she was talking about me, which you might not have heard, she mentioned BI। हम लोग इसको बोलते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस। एक ऐसी रिपोर्ट जो मेरे को इन्फॉर्मेशन ऐसे देती है सो दैट आई एम एबल टू टेक अ डिसीजन। अब ये वो रिपोर्ट नहीं है जिससे डिसीजन ही लिया जाता, अब ये रिपोर्ट है जिससे डिसीजन लिया जाता है। स्टॉक रॉ मटेरियल कम होता है ना किसी कंपनी का, 1 महीने पहले सिस्टम बताना शुरू कर देता है कि रॉ मटेरियल आपका कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, डेली रूटीन में आप लोग यूज़ करते हो, सुनते हो। एक टाइम होता था जब व्हेन वी यूज्ड टू ट्रैवल बाय ट्रेन, तो ट्रेन आधा घंटा लेट, 1 घंटा लेट, स्टेशन पे जाओ वहीं बैठे, पता ही लगता था। पर आपकी जनरेशन अच्छा है ना, एक मोबाइल एप्लीकेशन है, वो बता देती है कि ट्रेन है कहाँ पे। हम घर से उस हिसाब से निकलते हैं, हम पहले जाते ही नहीं हैं, राइट? तो ये किसकी बदौलत है? कुछ देर के लिए हमारी कंट्री के रेलवे मिनिस्टर रहे हैं मिस्टर पीयूष गोयल, और मिस्टर पीयूष गोयल का जो टेबल था उनकी मिनिस्ट्री में, वो इतना बड़ा टेबल था, और उस टेबल के ऊपर डैशबोर्ड था, और डैशबोर्ड में वो हर ट्रेन की सिचुएशन देख रहे थे कि ये ट्रेन आधा घंटा लेट है, ये टाइम पे है, ये कवर अप कर रही है, वॉट एवर। और जैसे कोई ट्रेन लेट होती थी, इमीडिएटली वो उस डिपार्टमेंट को पूछे व्हाट इज द रीजन दैट दिस ट्रेन इज गेटिंग डिलेड, राइट? तो ये रिपोर्टिंग का बेनिफिट है कि मैंने इमीडिएटली उसी बंदे को पकड़ा, भाई क्या क्यों हो रहा है। तो पूरा का पूरा वी कॉल इट एज डैशबोर्ड। डैशबोर्ड हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक समय में आप अलग अलग इन्फॉर्मेशन देखते हो, उसकी रिपोर्टिंग देखते हो, और हेल्प करता है आपको डिसीजन लेने में।
आज अगर कोई भी आदमी 15 अलग अलग काम करता है, कर सकता है, वो तभी कर सकता है उसके पास अगर डैशबोर्ड अवेलेबल है। और डैशबोर्ड अवेलेबल होता है रिपोर्टिंग से, उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस। सो इफ एनी बिजनेस हैज टू ग्रो, हैज टू यूटिलाइज इट्स रिसोर्सेज optimally, then they have to have some kind of reporting which help them to take decisions. उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस। तो बिल्कुल नई टर्म है आप लोगों के लिए, बट इंडस्ट्री में ये पुरानी होती जा रही है कि इस तरह की भी चीज़ होती है। हाँ, आपके लिए जो आप लोगों ने सुना है इसका नाम है डेटा साइंसेस। ये बीआई का नेक्स्ट लेवल है। जैसे डायमंड्स देखे है ना आपने, नहीं देखे तो सुना तो होगा। तो डायमंड्स भी वहीं से निकलता है जहाँ से कोयला निकलता है, ठीक है, वो भी एक स्टोन है, ये भी एक स्टोन है, बट इसको हम लोग प्रीशियस स्टोन बोलते हैं। जो कोयला निकालता है और जो डायमंड निकालता है वो दोनों माइनर अलग अलग होते हैं। कोयले वाले को डायमंड की पहचान नहीं होती उतनी, इसलिए डायमंड वाले को पता लगता है कि ये डायमंड है या नॉर्मल पत्थर है, राइट, क्योंकि कलर्ड पत्थर भी आते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी कलर्ड स्टोन और एवरी ब्राइट स्टोन इज अ डायमंड, इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो इसके लिए डिगिंग करनी पड़ती है, इसलिए उस टर्म को यूज करते हैं हम लोग माइनिंग एंड माइनर्स, राइट। सो दिस माइनिंग इज ऑल्सो हैपन्स फॉर डेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा माइनिंग ऑफ डेटा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि बहुत बड़ा डेटा का ओशियन है, उसमें बंदा जाएगा, डूबेगा और वो डेटा बाहर निकाल के लेके आएगा जिसकी उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। पॉलिटिकल पार्टी को डेटा चाहिए, बीजेपी को चाहिए वो सारा डेटा जिससे कांग्रेस को नीचे दिखा सके, कांग्रेस को चाहिए वो सारा डेटा जिससे बीजेपी को नीचे दिखा सके। और दोनों डेटा उनको कहाँ से मिलेगा? फेसबुक से। अब फेसबुक के पास ओशियन है, तो उनको स्पेशलाइज्ड पीपल चाहिए, टेक्निकल पीपल लाइक यू हु विल गो डीप डाउन and find out that data so that we will sell it to BJP and we make money. We sell similar type of data to Congress and make money. We'll sell it to other political parties and make money. डेटा वही है, पर उसका यूसेज अलग अलग करके हमने वो डेटा बाहर निकाल दिया। तो इस काम में क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, तो आज की तारीख में डेवलपर से ज़्यादा आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है। पैसे ज़्यादा मिलते हैं, बट फिर बात वही आती है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो स्टार्ट आपको करना होगा यहाँ से। तो चाहे आप DBA बनो, चाहे आप डेवलपर बनो, चाहे आप किसी मैनेजमेंट कंपनी के हेड बनो, वहाँ पे भी आपको डेटा देखना आना चाहिए। अगर डेटा देखना ही नहीं आता टेक्निकली नॉन टेक्निकली, तो आप आज की तारीख में सस्टेन नहीं कर सकते इन बिगर कंपनीज। अगर कोई ये सोचता है कि सर मेरे को तो ये लेक्चर, आज जिस लेक्चर में बैठा हूँ मुझे चाहिए ही नहीं था, क्यों? क्योंकि मेरे फादर साहब का बिजनेस है, मैं तो वही वाला बिजनेस करूँगा, तो मुझे इस लेक्चर की जरूरत नहीं है। लेट मी ऑल्सो टेल यू, आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड। मेरा परिवार भी पिछले 50 साल से बिजनेस चला रहा था, बट आई वॉज द फर्स्ट वन टू मूव आउट फ्रॉम दैट बिजनेस। तो अगर आपने वही काम करना है, अपने फादर का बिजनेस ही रन करना है, तो उसमें आज का तो कुछ ऐड करोगे ना, कि जो वो टेक्नोलॉजी चलती आ रही है, जो तरीका चलता आ रहा है, उसी तरीके से आप काम करोगे। अगर करोगे तो नहीं चलेगा। इफ यू वांट टू रन बिजनेस विद योर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस, देन द वेरी फर्स्ट पॉइंट इन योर लर्न इज दिस, हाउ टू हैंडल दिस। इसको हैंडलिंग करनी नहीं आई, कुछ नहीं कर सकते। तो इसको हैंडल करने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ता है डेटाबेस, और डेटाबेस में सबसे पहले पढ़ना पड़ता है आपको SQL, which we call it as structured query language। अब आप बोलोगे कि सर ये तो मेरे रेगुलर सिलेबस में है, तो मैं रेगुलरली पढ़ी ना। तो जो आप पढ़ रहे हो and something what we are using in industry, there is no match। आप सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हो, जॉब लेने के लिए नहीं पढ़ रहे हो। सो अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। और मेरे बाद मुझे लगता नहीं ये बात आपको समझाने कोई और आएगा, दैट क्लियरिंग एग्जाम इज इम्पॉर्टेंट, गुड मार्क्स इम्पॉर्टेंट, बट इक्वली मेक योर सेल्फ अवेलेबल फॉर अ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। You have to learn that particular thing as a professional, not as a student।
to get a job. ये बात शायद आज समझ में नहीं आएगी. जब जॉब करने चले बड़ा जरूरी है. अगर मैं सीक्वल पढ़ता है ना, अगर मैं सीक्वल पढ़ता है तो उस पर इन सबका मीनिंग पता होगा. The first basic है. If management people are thinking that it is not required for us, it is required for you as well. I told you data is important for you too. Right? और इसमें कोई बहुत टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है इसको पढ़ने के लिए. बहुत सिंपल है. Everything is very very simple. But at least उतना पढ़ना जरूरी है. क्योंकि कल आप किसी एम्प्लॉय को नहीं बोलोगे कि मेरे को ये चीज ढूंढ के लाके दे कंप्यूटर में से, आपको पूरी ढूंढनी है. तो you should know the terms, the words. That is very important. Right? जैसे अगर मैं वर्ड यूज करता हूँ फिर जनरली दिस पर्टिकुलर वर्ड इज बीइंग यूज्ड बाय सप्लाई चेन मैनेजमेंट पीपल. फिर बॉम्ब ये आप लोग यूज करते हैं, बट इनको भी बताना चाहिए इसका मीनिंग क्या है. कल इन्होंने आपसे बात करनी है. सो वी गॉट एज वर्क इन प्रोग्रेस, बिल ऑफ मटेरियल हम लोग बोलते हैं. राइट? जैसे ये लोग भी बोलते हैं क्लास, ये लोग भी बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ये लोग भी बोलते हैं बुकिंग. Some words, some technical words. So you also got to understand the knack of that particular word to be understood is very very important. That you have a feel of that particular. I want to ask you a question. SQL, structured query language, it's a language. But question to technical people is it a third generation language or fourth generation language? SQL is a third generation language. This answer is absolutely wrong. SQL is a fourth generation language. I will prove it. Fourth generation languages are those languages which are very close to English grammar. Fourth generation languages are very close to your English grammar. The way you speak, the way you write. For example, I want to select salary from employees table. I want to select marks from student table. So how you will write it? I want to select marks from students table. That's it. Command is done. It is that easy. Have I written syntax of a command? Answer is yes. I have written syntax of a command. This command is written like this. If you say, sir, I want to select marks from students table where class teacher is Amit. So, select marks from students where class teacher is equals to Amit. Done. Sir, I want to order the data in ascending order as per marks. Okay. Order by marks. Done. So this is a fourth generation language, not third generation language. Because the way you speak, the way you write, and very close to English grammar. Very close. It's very very. Now, where you will write this command, you have to use some software, you have to use some environment. So this command, generally for Oracle I am talking about, we use SQL developer. On everybody's machine, you have to have this tool to run these commands. But in today's world, when we are talking about cloud, Oracle says don't use this. We have given something called as Apex, Application Express. And I guarantee you, in Ambala no one has used Apex. I guarantee you that. And I also guarantee you, you will be the first one to use Apex. The moment you will go out from your college and you will say, I am using Apex, people will ask you what is Apex. So we are giving you extra advantage, edge, but you have to use it. You have to study it. You have to learn it. And remember one thing very clearly in your head, that
I am making my career. I am not clearing BCA, MCA, MBA. I am making career. And I am going to do something for my country. That is very important thought. जितने मर्जी अच्छे प्रोग्रामर बन जाओ, अगर बात करने की तमीज़ नहीं है ना, कोई फायदा नहीं। अगर बात करना नहीं आता तो आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। 2 कंपनीज ऐसी थी जहाँ पे मैंने डील किया पाकिस्तान में। पाकिस्तान का नाम सुनते ही आपको मालूम है कि आप मन में आता सबसे पहले। बट आई हैव वर्कड विद दोज 2 कंपनीज ऑलमोस्ट फॉर 3 to 4 years। तो अगर मैं अपनी कंट्री के बारे में नहीं सोचूंगा तो आप कभी भी काम नहीं कर पाओगे। अगर आपकी ज़ुबान अच्छी नहीं है, आप अपना इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाओगे। अगर आपकी ज़ुबान अच्छी नहीं है, आप कभी मैनेजर नहीं बन सकते। अगर आपकी ज़ुबान अच्छी नहीं है, आप किसी के सबॉर्डिनेट नहीं बन सकते। अगर आपकी ज़ुबान अच्छी नहीं है, आप किसी के कलीग नहीं बन सकते। अगर आपकी ज़ुबान अच्छी नहीं है, आप किसी के फ्रेंड भी नहीं बन सकते, और स्टूडेंट तो बने नहीं सकते। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग बिफोर अ BCA, MCA, MBA प्रोफेशनल। बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। एंड लास्ट, try to be this, try not to be this, try to be JC, try to create jobs, don't seek jobs, okay? Because if there is disappointment that I could not get a job, is still okay, right? And if you get a job in IBM or in Google, yes, it gives satisfaction, happiness to some extent. But the moment you become a job creator, and because of you, somebody else is getting job, it's an immense, it's a very divine feeling. And that is what my suggestion to you is. Ultimately, at the end of the day, you are following your dreams. So follow your dreams, try to achieve that. I wish you all the success in your career and all your future endeavors. I'll be here. Whatever queries, doubts you have, you can ask me anytime. Thank you very much.